अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ENG001 की GDB नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको फुल डिटेल में सब दिखाऊंगा और बताऊंगा और इस GDB से आपके फुल मार्क्स आएंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो उसकी फ़ाइल आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, लेकिन उस फाइल का पासवर्ड जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके बगैर वो फाइल जो है वो ओपन नहीं होगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं कि वेबसाइट्स किस तरह बनाई जाती हैं, तो एक कोर्स मैंने फ्री स्टार्ट किया आप लोग के लिए, HTML ये इस नाम से, तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसको करने का फ़ायदा क्या आपको होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इस कोर्स के करने के बाद आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी विदाउट नीड एनी डिग्री। वो विदाउट डिग्री कैसे जॉब मिलेगी, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारे पास है वो GDB है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यस ऑनलाइन लर्निंग के बारे में है बेसिकली ये। यस ऑनलाइन लर्निंग कैन बी लाइफ लाइन टू दोज हु हैव ऑब्स्टेकल्स सच एज geographical distance or physical disabilities, because for those who cannot come to their campus or go to college or school due to physical disabilities or geographical distances, online learning is very useful for them, those so that they can learn a lot from home. It is very difficult for a person suffering from physical disability to come to an institution and learn in that institution, because geographical distance also cause a lot of difficulties. Online learning is a platform that benefits not only for normal people but also many people, and especially for those who are suffering from physical disability and due to geographical distance to their institute or cannot go to the college and have a hard time. Online learning is very useful, is very helpful in this. Online learning, disabled students gain easy access to all educational material right at the comfort for their home. This online learning setup significantly removes the hassle of physical exertion for mobile impaired students, while also making life easier for the visually impaired or hearing impaired ones. This allows them to explore the world in a much free environment, removing discouragement of learning and encouraging them to participate more actively instead. So guys, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. So thank you so much guys, you all have a good day.